हाय गाइस, आज मैं टैग के ब्लूटूथ रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये जो मेरे ब्लूटूथ हैं पूरी तरीके से डेड हो गए हैं क्योंकि इसमें वायर जो है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। मेन रीज़न इसके ख़राब होने का वायर ही होता है क्योंकि लेफ़्ट साइड में बैटरी होती है जो वायर के थ्रू ही मदरबोर्ड को राइट साइड में पावर देती है। और इसका जो क्लिप है, ये जो ईयरफोन में स्टक ईयर पे स्टक होती है, वो भी टूट चुकी है, तो मैं उसे भी फिक्स करूँगा। अगर ये जो वायर है ख़राब है, शॉर्ट है, तो या फिर लेफ़्ट साइड का स्पीकर नहीं चलेगा या फिर पूरी तरीके से ब्लूटूथ डेड हो जाएगा। मेन रीज़न जो इसके ब्लूटूथ का ख़राब होने का कारण यही होता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटे को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें बैटरी है। बैटरी से वायर के थ्रू पावर जाती है मदरबोर्ड में। देखिए इधर राइट में इसमें मदरबोर्ड है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मदरबोर्ड है। कि अटैचमेंट को हटाते हैं और फिर मदरबोर्ड को निकालेंगे। ये देखिए, इसमें वायर जुड़े हुए हैं लेफ़्ट के और बैटरी के और इधर राइट के स्पीकर के। तो हमें लेफ़्ट के स्पीकर के और बैटरी के वायर हटाने हैं। बैटरी को कट कर लेंगे पहले, अलग अलग वायर काटेंगे जिससे बैटरी शॉर्ट ना हो। और इसी में हम जब दूसरा वायर लगाएंगे सोल्ड कर देंगे। ये स्पीकर के वायर हैं ब्लू कलर के। और वायर को कट कर लेंगे और इस वायर को हम पूरी तरीके से निकालेंगे। देखिए, वायर पूरी तरीके से सड़ गया है, ख़राब हो गया है। इसको फेंक देंगे अब। और इसमें जो वायर है वो तो निकला है, लेकिन वायर की जो प्लास्टिक है इसके अंदर ही है, तो उसको क्लीन करेंगे क्योंकि अगर क्लीन नहीं करेंगे तो दूसरा वायर उसके अंदर नहीं जाएगा। तो उसके होल बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, उसकी प्लास्टिक को निकाल देंगे। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their देखिए, वायर लेंगे। मेरे पास पुराने ईयरफोन पड़े, उसमें से मैं वायर ले लूँगा।
ये देखिए STC का ईयरफोन था मेरे पास, उसमें उसका वायर मैं ले लूँगा। ये फ्लैट केबल है। वो वायर में कम से कम 4 वायर होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो हम उसके पेयर बना लेंगे और उसको 4 में बना लेंगे, क्योंकि 4 वायर की रिक्वायरमेंट है इस केबल में। और उसके लेंथ के हिसाब से काट लेंगे। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. केबल को टेस्ट कर लेंगे कंटिन्यूटी, कहीं केबल ख़राब तो नहीं बीच से, या फिर आपस में वायर शॉर्ट तो नहीं है, तो हम उसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. केबल से एकदम सही है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, सोल्ड करेंगे अंदर मदरबोर्ड के। ये स्पीकर के वायर हैं लेफ़्ट के, इसको हटा रहे हैं हम, सीधे मदरबोर्ड में ही जोड़ेंगे, सोल्ड करेंगे। और ये बैटरी के हैं।
girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. यहाँ पे टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं श्रिंक ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ जिससे वायर आपस में शॉर्ट न रहें और वो स्ट्रॉन्ग जुड़े रहें। तो अब स्पीकर के वायर जोड़ेंगे, फिर इसमें बैटरी लगाएंगे। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. The girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their अब सब जॉइंट हो चुका है। अब इसको बंद करेंगे ब्लूटूथ को, फिर बैटरी को लगा के। इसका वायर थोड़ा लूज बाहर आ रहा है, तो इसमें एडहेसिव टारा डाल देंगे जिससे कि वायर बाहर ना आए। girls
girls with their nails done. Girls with their nails done. चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। Girls with their nails done. ये ऑन हो गया। Girls with their अब इसको फ़ोन से कनेक्ट करके देखेंगे। girls with their nails done. कनेक्ट हो गया, ये ब्लूटूथ अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसकी जो क्लिप है जो ईयर पे स्टफ होती है उसको चिपकाएंगे। इसके लिए मैं फेविक्विक यूज़ कर रहा हूँ। Girls with their nails done. 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 ये देखिए चिपक गया है। काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। कुछ प्लास्टिक में वैसे वर्क नहीं करती फेविक्विक, लेकिन ये इसमें ये अच्छे से चिपक गया है। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।